lives and strengthening souls. Bliss is all about that. Hello, ladies and gentlemen. Aisha Katyal welcome you all to today's talk. Today I'm standing at PhD Chamber of Commerce and Bliss Foundation organizes a wonderful event that is Sparsh. It's all about empowering women. So, do you want to know what the event is exactly about? So, for that, you have to come with me. तो अब हम बात करेंगे मिसेस निधि अग्रवाल से जो फाउंडर हैं ब्लिस फाउंडेशन के। तो जानते हैं कि कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था और क्यों उन्होंने इसको शुरू किया। हेलो मैम। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि ब्लिस फाउंडेशन आपने कब स्टार्ट किया, क्या वो आइडिया था कि आपको लगा कि अच्छा लेट्स कम अप विद सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव? ओके, ब्लिस फाउंडेशन 2015 में एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था, बट रजिस्टर हमने 2016 में कराया। और जब मैं खुद भी एक सर्वाइवर हूँ और मैंने देखा कि इसमें बेसिकली फेमिनिटी बहुत कम हो जाती है लेडीज़ की, आईब्रोज चली जाती हैं, बाल चले जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो उसमें सपोर्ट सिस्टम की भी बहुत ज़रूरत होती है, जिसका बहुत ज़्यादा मीन्स हमारे ट्रीटमेंट में, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सपोर्ट की बहुत कमी महसूस हुई। देन आफ्टर दैट मैं डॉक्टर गीता से मिली और सपोर्ट ग्रुप के बारे में मुझे मालूम चला। देन मैंने आना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमने ब्लिस फाउंडेशन बनाया। बेसिकली ब्लिस का अर्थ है परम सुख हमारा, और ब्लिस फाउंडेशन का मोटो है ब्यूटीफाइंग लाइव्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोल्स। तो उसमें हमने जो स्टार्टिंग करी थी वो ब्यूटी थेरेपी एंड थिएटर थेरेपी के थ्रू करी थी। बट थोड़े टाइम के बाद हमें लगा कि जो कैंसर के प्रति जागरूकता है लोगों की बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर अवेयरनेस वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना स्टार्ट किया। अब तक कितने साल हो गए इस फाउंडेशन को रन करते हुए, तो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको हुए, किस तरीके के लोगों से आपने मतलब मिले, आप इनकाउंटर किया और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कोई सर्टन केस है आपके माइंड में जो आपको याद हो? हाँ, एक हमारी सर्वाइवर मिली हमको, जिसको जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसकी बच्ची 3 मंथ्स की थी। और उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फेमिनिटी। तो ये बहुत बड़ा उसके लिए सेटबैक था और अभी तक उसका केस चल रहा है और अभी कुछ फाइनल हो नहीं पाया। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम किस तरह से खुश रख सकें। कभी हम उसको फैशन शो में पार्टिसिपेट कराते हैं, कभी ड्रामा पार्टिसिपेट कराते हैं, तो इस तरह से जैसे उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके। ये मेन दैट इज़ वेरी टचिंग। ओके, एक मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? आप जितनी उड़ान भर सकते हो भर लो, क्योंकि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जो सपनों में जान डाल देते हैं। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। तो आपने 2 लाइनों में ही सबके लिए मैसेज दे दिया, दैट एम हाई एंड कीप योर होप्स अलाइव। अपनी जो उम्मीद है उसको मत मरने दो, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। नाउ वी आर इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर गीता, द co-founder of Bliss Foundation. Hello ma'am. So today you have organized this mega event which is going to be something about... Well, it's about trying to learn about breast and cervical cancer awareness in a slightly different way. Because a lot of times we go for awareness lectures, try to tell people what is it that they're supposed to be looking for, but I have a feeling that they don't really understand. So this workshop is unique in that it's a touch, feel and do workshop, which essentially intends to get women to feel the abnormalities in a dummy breast. So they know exactly what is it that they're looking for in themselves. Otherwise, lectures, there's a lump, there's a breast discharge, but they don't really figure out what it is. You said that there are a lot of workshops and people are not able to understand things. So what is that USP of this event? What is in your mind, the idea? Yeah, so this is a touch, feel and do, like I said, because here you're getting women to touch and feel abnormalities. They know exactly what the abnormalities look like. Because suppose I were to say that your skin, if it looks like the peel of an orange, you should be worried. But they don't know exactly how it looks like on the skin. But if you show that to them on a dummy, it makes more sense. Okay. So that's how it is different. So this is unique in that sense. And then what we do in the workshop is we do a pre-workshop questionnaire and get people to answer those questions, and you would be surprised at how little awareness exists. But once we've done the lecture, done the questionnaire again, and you realize how the awareness goes up significantly to almost 80 to 90%. And then you get them to touch, feel,
it's another thing added to their knowledge. It creates a lasting impression. That's amazing. It's going to be an interactive session. So Shivani Didi is going to help us to learn how to cope with situations that arise in the aftermath of this disease. We all know Sister Shivani is a spiritual leader, and she tells you things on how to lead your life better, how to make yourself better every single day. So this talk is especially, especially dedicated to our patients who've been through this disease and live with all kinds of fear. Fear is something that is so difficult to take out from you after you've been through the experience of breast cancer. Why you chose her to convey this message? Like, what you find? There's some idea behind everything. So what was that which, made you choose her to convey this message? So she has been connected with us in a big manner, and she has been involved with talking to cancer patients. She's done it quite a bit, and she has been associated with Max Cancer Center in that sense, because she has gone out to various centers and done these talks, and we know she has that powerful presence, she has that aura, and you feel that what she says is doable. And I think all in all, she's a great personality to be hearing things that you want to hear and emulate in your own life. अब हम बात कर रहे हैं मिसेस मीनू से, जो ब्लिस फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और लेते हैं उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन. Basically, Bliss Foundation has been formed by the champions. यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब कैंसर चैम्पियंस हैं या कैंसर सर्वाइवर्स हैं, और हमें गाइड करते हैं हमारे डॉक्टर्स. फॉर एग्जांपल डॉक्टर गीता is also co-founder with us. So under her guidance, we are able to share the correct information, the correct techniques, and everything medically correct. Sometimes you see on social media there are a lot of things, but they are not backed up by proper evidence. Kuch bhi, people just share anything. But since we have the doctors with us, we know that whatever we are sharing has been authenticated, it's been checked, and it has the right meaning. It conveys the right things to the people. For example, ये जो हमने अभी workshop start करी है, it is touch, feel and do. You have read about self-examination number of times. पर क्या किसी को actually पता है कि कैसे self-examination करना है? फोटो देखकर, वीडियो देखकर आप वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं. There is a technique. For example, हमें डॉक्टर गीता ने बताया कि हाथों को you feel it with the flat of your hands. It is never like this. But 90% of the people feel it like this. They don't know how to feel themselves. So basically, we are trying to tell them to feel themselves correctly, and also try and detect if there is any abnormality anywhere. So right? Would you like to share and enlighten us about some of the basic symptoms of it? Like, what are some basic symptoms? Symptoms are there which we tend to ignore. For example, there is a lump formation. It may be painless. It's not necessary that it should have pain. There could be a lump. There could be an inverted nipple. There could be orange peel to a breast, which we may not notice otherwise. We will not notice these things till we know about them. So we are trying to make people aware, so that we can at least try and catch this early. Exactly. Because this is the only thing we can do. Prevention is better than cure. Exactly. So that's amazing. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, and मुझे आशा है कि ऐसे अच्छे initiatives जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और भी आगे होते रहें. Thank you. Thanks for talking to us. So I'm sure that you have got it right that prevention is better than cure and awareness is indispensable. This event is indeed very enlightening. That's all for the day in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV. हर पल आपके साथ.